This is Kendujhar, the heaven of nature. तो दोस्तों अभी मैं क्रॉस कर चुका हूँ जुड़िया घाटी और अभी यहाँ से बाईपास आएगा और हम बाईपास में एंट्री कर रहे हैं जस्ट। तो यहाँ से फिर से राइट जाना पड़ेगा हम लोग को, जो कि हम लोग का कनेक्ट होगा NH में। और ये NH है जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल हाईवे 20 और केओंझर जमशेदपुर हाईवे भी कहते हैं इसे। और यहाँ से स्ट्रेट 8 किलोमीटर जो है सिरिसपाल है, फिर वहाँ से हम लोग को फिर से राइट टर्न मार के गाँव के अंदर जाना है। तो बाइक पे ट्रैवल करने का सबसे अच्छा पार्ट जो मुझे लगता है वो है रास्ते। फाइनली हम पहुंच चुके हैं सिरिसपाल डैम। ये व्यू कुछ ऐसा है दोस्तों जैसे मैं बचपन में बनाया करता था अपना ड्राइंग शीट पे। माउंटेन्स, सामने पानी और माउंटेन्स के नीचे छोटे छोटे घर। हाँ, बस माउंटेन का शेप थोड़ा सा अलग है। She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse. बाइक जाने के लिए रास्ता है नहीं, पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ से बाइक लाने की। I don't think so कि ये पॉसिबल है। Let's see the condition of the road. This is not the road actually. गाड़ी उतर चुकी है सेफली।
दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ उस पहाड़ के नज़दीक, देखता हूँ कितना पास तक जा पाता हूँ। इट्स अबाउट 6 PM और मैं सोचता हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट वेदर एंड बेस्ट टाइम टू सी Sirishpal डैम। द क्लाउड ओवर द माउंटेन एंड द सन rays reflecting on water, looking awesome. काश मैं उस पहाड़ पे चढ़ पाता। और गाइस आप देख सकते हैं कितनी सुंदर जगह है ये। वैसे तो आज का प्रोग्राम कहीं और का था, पर टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम लोग यहाँ पर आए। और ये जगह भी बुरी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड कर रहा हूँ दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे।